So hello and hi everyone and good evening to you all. So my name is Sibasankar with you. So I welcome everyone to the StudyIQ YouTube platform, Odisha section and the Odisha PCS exams, and to the Paripurna special MCQ session and to the what Paripurna special MCQ session. Ajira discussion in this today's MCQ session, we will have environment questions that would be me by Sibasankar Hajra, and these MCQs are the quality of MCQ which is I would say what majority of the questions is based on UPSC PYQs and UPSC PYQs questions also there. So let's begin the session. The session को begin करिए, and before that I will request everyone to join fast. Good evening to everyone. Rajendra, Susmita, Astha is also there, and I would say Afrin also there. Good evening to everyone. So so don't forget to comment live session चलीची comment करि परिबो. Samir also there. So let's begin the session. तो मो मोबाइल से देखुची आपण मन को comment को मु देखुची. So let's begin the sessions, and this is the special session as I requested everyone that do comment with number and share as much as possible hey paruchi. Chalo fir we will begin the session. The first question comes. Sasmita also there, Kamalakant also there. Chalo, the first question is coming up. The first questions. The term ecological footprints refers to what? Now this is basic question. These are the what basic questions. Some of the questions are the basic questions I have taken, but apart from that there would be also the difficult question will be there. The first question is the ecological footprints refers to what? I am watching your comment. Good evening to all. Sasmita, Kamalakant, Samir, Afreen, Astha, Sumitra also there, Rajendra also there. Share as much as possible jete hei paribo apun mane share karantu so that majority of the candidate हमको maximum benefits hei paribo, right? Rajendra Parida coach C, Afrin coach B, and what I would say jem देखिए हमें कई बार सस्मिता भी coach B, Pratyush, good evening Pratyush. चलो फिर बी देखिबा तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस बी आसुची हम देखिबा पुनी कोन होची आंसर कोन रही सेटा देखिबा. तो से कहउछंती कोन अच्छा हमें कहबा दैट इज व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स आगे हमें बुझिबा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कोन. So it's C. Kamalakant Kochi C. Majority is going for the B. तामे देखो ecological footprints what? Now देखो ecological footprints रा meaning होची कोन. So your answer will be what? A. So your answer will be what? A. So answer will be what? A. So that means हमें कहबा कौन से भी कहीं भी तमने right answer देई ना हो. So answer would be A. तो answer कोन रहबो तमन करे A. Now ecological footprints अर्थात कोन. Let's say the total population is 8 billion population. The total world population is 8 billion population. ये जो 8 billion population ए माने खाइबा किछ डिमांड अछि कि नै से मान करो खाइबे पीबे चलिबे ए कहा पर डिपेंड करूचंती अर्थ ऊपर डिपेंड करूचंती ए कहा ऊपर डिपेंड करूचंती अर्थ. दैट मींस द प्रोड्यूस अर्थ जहां प्रोड्यूस करूची ये 8 बिलियन लोकंकर डिमांड को फुलफिल करूची, राइट. सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मींस जेति की डिमांड्स दरका जोटा हमर अर्थ हमको दउची दैट इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. दैट इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. ताले हम कहबा द टोटल फॉरेस्ट एरिया नीडेड टू सपोर्ट द बायोडायवर्सिटी ना ए त ही परिबनी. ग्रीन हाउस गैसेस ए भी ही परिबनी. अच्छा रुह एटा सॉरी सी इज आंसर सॉरी मु देखिने सॉरी सी वुड बी द आंसर. ताले एटा कोन हिजबो तमरो सी विल बी द आंसर. ओके पार्डन मी मु ए देखिने ऑप्शन ता एते क्लोजली है ना. तो इट वुड बी व्हाट दैट मींस हमें कहबा द मेजर्स द डिमांड्स किए करूची ह्यूमन डिमांड, राइट. इट वुड बी व्हाट योर ह्यूमन डिमांड जहाँ को फुलफिल किए करूची, राइट. हमें कहबा नेचर और एठी हमें कहबा अर्थ और हमें ताको कोन कहबा अर्थ, राइट. जो डिमांड हमें करूचे जोटा कि फुलफिल अर्थ करूचंती दैट इज द व्हाट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, राइट. दैट इज व्हाट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, करेक्ट. सी के को माने आंसर देइछो सी देखिबा राजेंद्र देइछि सी. द करेक्ट आंसर इज राजेंद्र सी. बाकी कहीं दे ना तो करेक्ट आंसर केवल राजेंद्र ही देई पारिछि. नाउ एठी आउ गोटे जिंस तम मन को मु कहि के रखे वर्ल्ड इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट्स आउ गोटे अछि कोन कहला दैट आमे कहबा अर्थ ओवरशूट डे. आउ गोटे हला अर्थ ओवरशूट डे. मु ए कांसेप्ट मध्ये तम मन को कहि के रखे अर्थ ओवरशूट डे कोन के कहबो अर्थ ओवरशूट डे. नाउ अर्थ ओवरशूट डे जदि हमें देखिबा वर्तमान रही तमरो जुलाई
2025 रही जुलाई 24, राइट। तो ये जुलाई 24 रे पड़ुची अर्थ ओवरशूट डे 2025, जोटा कि आमे कहबा 2024 रे थिला 1 अगस्त, एटा थिला तमर कोन 1 अगस्त थिला। तो ताले जदी देखिबा को माने देइचो कार्बन फुटप्रिंट्स नाइ एटा इ कार्बन फुटप्रिंट्स कथा न इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मु पचारिची, कार्बन फुटप्रिंट्स पचारिनी मु। ताले में देखिबा तो अर्थ ओवरशूट डे कौन, जदि तुमको कहीं पचारे देखो ये जो अर्थ ओवरशूट डे एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स ये दीटा आमे कहबा इंटर कनेक्टेड, सेथि पई मु तुम को कहूची। तो अर्थ ओवरशूट डे रो अर्थात हैला भाबो आमे जे 8 बिलियंस लोक जो चलुचे अर्थ सरफेस ऊपर, अर्थ ऊपर केते 8 बिलियन लोक जो आमे चलुचे बा डिमांड हमर फुलफिल किए करूचंती, नेचर करूचंती। जदि नेचर भाबो नेचर टोटल प्रोड्यूस करि परिबे 8 बिलियन टन्स ऑफ किछि आमे कहबा फूड, लेट्स से अर्थ निजे प्रोड्यूस करूची 8 बिलियन टन्स रो से कोन करि परछु प्रोड्यूस करूची। आमे जदि ताके खाई को जदि खत्म कर देले बाय जुलाई, जदि आमे कहबा बाय जुलाई जदि 24 सुधा गोटे वर्ष रे अर्थ जहां प्रोड्यूस करूची ताकू जदि आमे खत्म कर देले तले जुलाई 24 रु डिसेंबर 31 जाए ताले एटा कोन हे गेला डेफिसिट हे गेला, एटा कोन हे गेला डेफिसिट हे गेला। हो कि नहीं ना भी बुझा पड़िबनी काहाकू। इज इट फाइन टू ऑल, राइट? बुझा पड़ी जबे समस्त को। गुड इवनिंग विजय लक्ष्मी। ताहले ए जोटा मु अर्थ ओवरशूट डे कहूचे दैट मीन्स द डे वर्ष सारा में जेतिकी अर्थ ऊपर डिमांड करूचे बा अर्थ वर्ष सारा जेतिकी प्रोड्यूस करूचे आमे ताकू जुलाई सुधा खाई के शेष कर दउचे। ताले जुलाई रु नेकी अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेंबर ए जो 5 मास आमे कोन डेफिसिट हे गेला, ताले सेटा को आमे कहबा अर्थ ओवरशूट डे। आ जोटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एटा आमे कहले आ गोटे है कार्बन फुटप्रिंट अर्थात कौन माने टोटल कार्बन प्रोड्यूस फ्रॉम माय एक्टिविटीज फ्रॉम योर एक्टिविटीज, राइट? क्लियर एवरीवन, क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल, कांसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। ओके इकोलॉजिकल देखो फुटप्रिंट्स आउ तमरो अर्थ ओवरशूट डे कहितली। आ गोटे कोन रहिला कार्बन फुटप्रिंट्स। भाबो मु गोटे पर्सन तुमको जदी कही पचारे के ताले कार्बन फुटप्रिंट कोन तमे कहबो सपोज लेट्स से मी एज ए पर्सन मु गोटे मोबाइल यूज करूची, कार्बन फुटप्रिंट कोन जदि तुमको इकोलॉजिकल जगह रे कार्बन पचारे, राइट? जदि तुमको कही कार्बन फुटप्रिंट्स कथा नहीं कि पचारंती ताले सिंपल तमे कहबो मोर गोटे दिनर एक्टिविटीज। लेट्स से मो पाखरे गोटे मोबाइल अछि, मु ताको चार्ज करूची, मु किछि एसी चलाउची, मु गोटे डिजिटल बोर्ड यूज करूची, ताले ये सबुर जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन होउची ता द्वारा किछि ना किछि कार्बन मध्ये प्रोड्यूस होउची, सेही जो कार्बनटा होउची माई कार्बन फुटप्रिंट। तो सेमिति गोटे देशर कार्बन फुटप्रिंट्स मध्ये रहिछि। चलो नेक्स्ट, सो आंसर इज सी। तो आंसर कौन है तमरो सी, तो आंसर कौन है सी। क्लियर एवरीवन? चलो सो आंसर इज व्हाट सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रामसर साइट इन इंडिया? बहुत बढ़िया, चलो चलो मु देखुची बहुत बढ़िया, शेयर करथाओ शेयर करथाओ। आई नीड मोर सपोर्ट, आई नीड मोर सपोर्ट, शेयर इट, राइट? मु तुमन को शेयर करो जेमती तुमरो जानचो कि प्रत्येक दिन मु संध्या 7टा आसुचे नहले 7:15 मैक्सिमम जदी सेतिक लेट हे परिबो संडे को छाडी देले तो सही भितर शेयर कर देई थाओ। ओके नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चंस। सो आफरीन कोची ऑल 2 नंबर क्वेश्चंस। आफरीन कोची ऑल से कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रामसर साइट इन इंडिया? अष्टमुड़ी, दैट नाला सरोवर, भितरकनिका, दीपुर बिल। सो देखिबा मेजॉरिटी आंसर कोन होसी आपण राइट। आई विल वेट फॉर द आंसर फॉर द ऑल्स। लेट्स सी what is the answer coming from your side. The answer is coming your side, majority is going for the C, many is going for the C. Okay, now first of Astamudi is a what lagoon lake. ये उची गोटे कोन, it's a lagoon lake. Where? Kerala. It's a lagoon lake, Kerala. Nala, that is what Nala Sarovar in where? Gujarat. Then Dipur Bill, it would be what? Nala Sarovar koti Gujarat. Next Bhitarkanika, Odisha. Next Dipur Bill, Assam. So these things are there, and they are what? Assam. Is it fine? So Astamudi in Kerala, in Kerala.
Nala Sarovar, Gujarat, Bhitarkanika, Odisha, and Assam is the Purbil. So all is correct. So all is correct. That means C. So all is correct. So it would be C. All is correct. So right answer देइछि कि राजेंद्र देइछि समस्त तो प्राय देइछन्ते आफरीन देइछि सुनीता देइछि विजयलक्ष्मी देइछि एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द सी सो यस राइट आंसर तो इट इज करेक्ट आंसर ओके मु एठी गोटे क्वेश्चन पचारिबी हाउ मेनी इंटरनेशनल वेटलैंड्स आर इन ओडिशा ओडिशा रे केतेटा इंटरनेशनल वेटलैंड अछि बा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हाउ मेनी इन ओडिशा okay in Odisha how many wetlands of international significance are there 91 चंद्र शेखर मल्लिक कौची 6 सस्मिता 2 म्यूजिक एडिक्टेड सोल 6 अच्छा देखिबा चलो हमें आंसर देखिबा तमन को किए दे आर ओडिसा रे मन रख ओडिसा रे किए ओडिसा रे एक होची मु हीराकुद गोटे होची तमर हीराकुद सेकंड तमर किए दैट इज आमे कहबा भितरकनिका ओडिसा रे केतेटा वेटलैंड अछि थर्ड दैट मींस आमे जाको कहबा तमरो सातकोशिया फोर्थ चिलिका फिफ्थ तांपारा and the sixth किए कहबा sixth one Ansupa what Ansupa so these are the wetlands of international significance ba Ramsar site in Odisha the Ramsar sites right these are the wetland of that means हीराकुद ताले महानदी ऊपर तीनटा हीराकुद महानदी के ऊपर सातकोशिया महानदी ऊपर अंशुपा महानदी ऊपर बाकी रहिला तमर कोन भितरकनिका में आसी जबा केंद्रापड़ा रे रहिला तांपारा गंजाम रे रहिला so these are the wetlands so it would be all next questions ओके बहुत बढ़िया चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा में नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा तमन को डिबेट को देखिली द कांसेप्ट कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट बहुत बढ़िया जोटा चंद्र लिखी कि राजस्थान रो किचन एंड मेनार टू वेटलैंड एडेड चलो फिर नेक्स्ट the concept carbon credit originated which international agreement reach which international agreement Afrin कौची B Afrin कौची कोन B रिसेंटली एडेड हेची अच्छा देखिबा बाकी बी कहउचंती चलो फिर देखिबा आंसर दियो फटाफट ट्राई इट तो मेजॉरिटी कहउची सस्मिता कहउची बी एम देखिबा दैट मींस से कहउची कार्बन क्रेडिट नामुआर बैकग्राउंड को जदी कहबी इट वाज 1970s रे हम कहबा इट वाज ऑल स्टार्टेड इन 1970s रे हम कहबा राइट 1970s रे कोन हैला तुमको सर कोन हैला बिकॉज़ ऑफ व्हाट द कन्वेंशन व्हिच कन्वेंशन ये कहबा 1970s रे हमनी को कन्वेंशन हैला that the world started to think about the environment किए कहबा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कोन रहिथिला तमरो एक मिनट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस so that Stockholm conference in 1970s and it was particularly 1972 and then it comes 1992 then it comes 1997 and what 1995 so these things obviously the answer would be
Kyoto Protocol. So answer would be what? Kyoto Protocol. So answer would be what? Kyoto Protocols. तो दैट मीन्स आम कह स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रु स्टार्ट होता इवन यही टाइम आम आउ गोटे जिनस देखी कि क्लब ऑफ रोम आउ गोटे कौन था क्लब ऑफ रोम जोटा तार फास्ट रिपोर्ट देता के 1972 रे एंड क्लब ऑफ रोम रो जो सेकेंड रिपोर्ट आसे 1992 रे जोटा कि बियॉन्ड द लिमिटेशन राइट एटा हूँ लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 रे लिमिट्स टू ग्रोथ दिए एंड 1992 रे से दिए कौन कि बियॉन्ड द ग्रोथ कौन हम बियॉन्ड द लिमिट्स कौन हम तो सेटा क्लब ऑफ रोम जहाँ को यूपीएससी मध्य पचार सो आंसर वुड बी क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होची तमरो ओजोन पई पेरिस एग्रीमेंट होची तमरो एनडीसी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पई हम कहबा दोहा अमेंडमेंट कहा को हेतला दोहा अमेंडमेंट हेतला हमरो दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस रा में कहबा जो कमिटमेंट ऊपर हेतला दोहा अमेंडमेंट राइट ओके चले नेक्स्ट next questions chalo next question the term bioaccumulation chalo for next bioaccumulation सेटा स्टॉकहोल्म ओके ठीक अछि चलो फिर बायोअक्युमुलेशन से कहूँ कि बायोअक्युमुलेशन कोटा भीतर करेक्ट हमको आइडेंटिफाई करे कि बायोअक्युमुलेशन bioaccumulation the term bioaccumulation refers to what the breakdown of pollutants by the microorganism कोन सेटा हबो the entry of pollutants into the food chains कोन सेटा हबो the gradual accumulation of the substance such as pesticide DDT हेई पारे in an organism तो मेजॉरिटी इज कैंडिडेट इज गोइंग फॉर द सी तो बायो अक्युमुलेशंस बिल्कुल सता में कहबा सो दैट इज द सी सो आंसर वुड बी सी दैट मींस गोटिए हमें कहबा स्पीसीज भीतरे राइट विद इन द स्पीसीज सो आई वुड से व्हाट इट वुड बी विद इन द स्पीसीज द पॉल्यूटेंट इज अक्युमुलेटिंग ताले बायो अक्युमुलेशन होची बोली हमें जानिबा काहे केमिति बिकॉज़ इफ द पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन द एनवायरमेंटल अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पॉल्यूटेंट राइट ताहले में ताकू कहबा देन वी विल कॉल इट व्हाट दैट इज द पॉल्यूटेंट नहले ताकू पॉल्यूटेंट कहबा नाही ओके ना बुझा पड़िबनी पॉल्यूटेंट केतळ कहजबो देखो हमें सेते बेले आकू कहबा जदी एनवायरमेंट देखो सब पॉल्यूटेंट आम बॉडी रे जे आम बॉडी रे जदी एनवायरमेंट रो पॉल्यूटेंट अधिक हो गेला कंसंट्रेशन भाबो जेमति कि पानी रे लेट्स से केते गोटे माइक्रोग्राम्स रो किछि गोटे गोटे पॉल्यूटेंट मिलुची बट आम बॉडी रे जदी ताठू अधिक मिलुची पर लीटर ताले हम ताकू कहबा चलो फिर नेक्स्ट को जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the greenhouse gases consider the following statement चलो बहुत बढ़िया चलो चलो बहुत बढ़िया यस नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन को ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर इजी क्वेश्चन तुम ऊपर रही इजी क्वेश्चंस गो फॉर इट चलो फिर से कहूँ कोटा रही कंसीडर द फॉलोइंग द वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस चलो फिर देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड is what longer atmospheric than the methanes. Methane is more efficient in tapping of radiation than the carbon dioxide. चलो देखिए हमें so music addicted C majority is going for B K B coach 1 and 3 coach Afrin Rajendra coach 5B Vijay Lakshmi 5B D is going by the Kamalakant Sasmita is going for the D Sumitra is going for the C okay चलो फिर आंसर देखिए हमें C Sunita is going for the D yes answer would be what D हब आंसर कारण राइट वाटर वेपर जालचे एंड अच्छा जदि आंक भितर मु आउ गोटे क्वेश्चन पचारबी के अमंग व्हिच इज द लार्जेस्ट आमे के सबुटो लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस की ए जो तीनटा तुमको ऑप्शन रे दिया जाईची अमंग दिस थ्री गैसेस लेट इट आमे CH4 मीथेन कथा कहिबा और आमे कार्बन डाइऑक्साइड कथा कहिबा और वाटर वेपर कहिबा कि ए तीनटा भितर सबुटो लार्जेस्ट की मतलब लार्जेस्ट की हम कहिबा जदि लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जदि मु कहिबी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट
पोटेंशियल मु कहनी लार्जेस्ट कहि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल लार्जेस्ट किए वाटर वेपर बहुत बढ़िया the largest is what water vapor so what its answer is D the answer is what D next questions with reference to the Indian laws about the wildlife protection consider the following statements the wild animals are the sole property of the government when the wild animals is declared protected such protection applies to its offsprings also the apprehension of a protected wild animals becoming danger to the human life is sufficient ground for its capture and killing answer दिया हाँ potential CO2 will be more देखो क्वेश्चंस रो क्वालिटी बहुत बढ़िया रही तुम क्वेश्चंस पूरा आम कह ओपीएससी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन रही यूपीएससी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन रही एंड दीज आर द मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर द पीवाईक्यू बेस्ड आम कहबा और द पीवाईक्यूज ऑफ द यूपीएससी ऑफ द पास्ट प्रेसिडेंटेड क्वेश्चंस आर गिवन टू यू तो चलो फिर देखिबा हमें तो आंसर कोन आसुची तुमरो विजय लक्ष्मी कहूची ए व्हिच वन इज द क्वेश्चन नंबर 6 चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 चले तले हम देखा डिस्कशन करबा व्हाट वुड बी आंसर की कहूची डी मध्ये कहूची चलो फिर डिस्कशन हम करबा डिस्कशन रे कोन जणा पडुची देखिबा कि आंसर कोन हबो तो मेजॉरिटी आंसर मु जदी देखिबी तो मेजॉरिटी आंसर डी जणे देइचो बाकी ए डी डी मध्ये बहुत जण कह दैट मीन स्टार्ट मधुचंदा कहूची डी डी सस्मिता भी कहूची डी ना देखा प्रथम कथा होची दैट मीन्स से कुछ प्रोटेक्ट दिस इज सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ये आमर नुह कि तमर कहार नुह दिस इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज करेक्ट आंसर व्हेन ए वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड तार ऑफस्प्रिंग मध्य प्रोटेक्टेड दिस इज आल्सो करेक्ट दिस वन इज आल्सो करेक्ट बट ध्यान से सुनो जदि 7 कोशिया लेट्स से हमें सुंदरबन जाइछे बा सिमलीपाल जाइछे गोटे मु एग्जांपल एटा देखो एटा रॉन्ग स्टेटमेंट केमिति देखो लेट्स से स्टेटमेंट को पढ़ो एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल ताले प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल किए लेट्स से मु एठी लिखली टाइगर एटा होची गोटे प्रोटेक्टेड किंबा एलिफेंट अच्छा टाइगर रो भयर कोन टाइगर को मार दबा कि हमें टाइगर दैट मींस से कहूची टाइगर रो भय तो लोकन को रहइबो ता अर्थात नै कि ताकू धरि कि मार दबा ता अर्थात कि ताकू धरि कि मार दबा कि हमें को दिस इज नॉट देयर राइट ऑफस्प्रिंग्स मतलब तार छुआ ऑफस्प्रिंग्स मतलब तार चाइल्ड तार ऑफस्प्रिंग मतलब छुआ से वाइल्ड बाघर छुआ हाथीर छुआ तो दैट वुड बी राइट सो कप जाको हमें कहूचे कोन साधारणतः हमें कप कहूचे तो कप ऑफ एलिफेंट हे परे कप ऑफ ये ही परे राइट अच्छा तेणु करके जदि हमें कहबा सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज व्हाट रॉन्ग एमति नाही कि ताकू भय अछि बोली हमें कोन धरि कि मार दो सब बाघ को ना कोन सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग सो आंसर वुड बी ए 1 and 2 correct everyone एबे बुझा पड़िबो explanation to all is it fine to all बुझा आसी गेला बुझा पड़ला समस्त को is it fine okay चलो फिर नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ स्टेटमेंट रो सेंस टा को देखियार अछि सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर लेट्स हम हीराकुद डैम करूचे किछि भी करूचे कृष्ण गंगा करूचे राटले करूचे हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलछि ताले हमें कहबा आकू नै कि हमें क्वेश्चंस बनै छी चलो फिर नेक्स्ट चलो हाँ तो जेतरे डैम कंस्ट्रक्शन करा जाउची कोनोसी गोटे रिवर रे बा कोनोसी गोटे एरिया रे जदी डैम रो कंस्ट्रक्शन होउची इट वुड बी ऑब्वियसली जदी हम कहबा सो दैट विल बी दैट सो ऑब्वियसली हम जदी कहबा सो इट वुड बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली जेतरे हीराकुद हैला लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेची इट विल रिड्यूस द सेडिमेंट फ्लो टू द डेल्टा ऑब्वियसली एटा भी हबो क्या ये भी मध्य हबो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज ये भी बिल्कुल हबो तो दैट इज व्हाई इट वुड बी ऑल विल बी डन सो इट वुड बी ऑल दैट मीन्स आउरी जदि मु स्टेटमेंट को ठेठी ऐड करबी कि दैट विल इनहिबिट्स
that will prohibit the extension of the expansion of the deltaic area, that will be also correct. That would be also correct. So it would be D. This is applied based questions. So this is what applied based questions. तो मु आपको कौन कहे तमन को कहले कि this is whenever you are solving this kind of questions, these are applied based questions. Application dam theory हेले तारो application कौन होउची, तो this would be what application, or I would say what applied based questions. Which of the following are the cause of eutrophication? Next, cause of eutrophication. चलो फिर next question. Which of the following is the cause of eutrophication? Cause of eutrophication. Which of the following are the cause of eutrophication? Eutrophication is a what process. Eutrophied mu kahini. I have not said eutrophied. Eutrophication मु कौन कही तुम को eutrophication. चलो फिर देखो. Now the runoff from the agricultural field, discharge of the detergents into the water bodies, industrial effluents, oil spill. चलो फिर आंसर देखिबा. तो सी 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 चलची ऑल चलची. तो मेजॉरिटी कहउचंती भाई देखो ऑयल स्पिल केमती हबो, ऑयल स्पिल हबो नाही. सो राइट, सो अरे ध्यान से कर लो. राइट, ऑयल स्पिल केमती हबो, काना ऑयल स्पिल इज नॉट ए रीजन. ऑयल स्पिल ये इटसेल्फ ये गोटे केमिकल टा. राइट, आप पई दरकार ऑर्गेनिक कंपाउंड दरकार. तो यूट्रोफिकेशन पई हमको कोन दरकार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दरकार. सो दिस इज नॉट नीडेड. तो दिस वन इज करेक्ट बिकॉज हियर वुड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड. हियर वुड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड हियर वुड बी. काना एठी हमें कोन नाइट्रोजन पकोचे, नाइट्रोजन गुडा आसे गेला पर यूट्रोफिकेशन रे हेल्प करिवो. एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी 1 2 3 not 4. So 4 got cancelled. So what? The 4 got cancelled. So it would be what? B 1 2 and 3. So it would be what? चलो फिर तो देखी दियो. ऑयल स्पिल डज नॉट कॉज, काना ये करिवो नाही. न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट दरकार ना. मु कोन कहली ऑर्गेनिक कंपाउंड दरकार. न्यूट्रिएंट अरे खाइबा को मिलिले सिना से दळ गुडा ग्रो करिवो. द वीड गुडा ग्रो केमती करबो. ऑयल स्पिल रु वीड कोन खाइबो, ताको किसी खाइबा मिलिबो की, मिलिबो ना. चलो फिर नेक्स्ट 9 number. In the context of the proposal to install the large scale solar power plant, consider the following statement. देखो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस नहीं कि आसी तम मन को पाई. तम माने कहलो कि सर टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन आनंतु. राइट, मु मध्ये तम मन को कथा रखिछि एंड आई हैव आल्सो कम्स विथ द डिफिकल्ट. एंड each day I will comes, I will have this kind of questions. That is the question which is demand रही ताकू नहीं कि आसीबी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नाइन सी दौच. चलो फिर देखिबा. नाइन मेजोरिटी सी दे दी. देखिबा में कमलाकांत, समीर, सस्मिता, मधुचंदा, म्यूजिक एडिक्टेड, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द सी. चलो फिर देखिबा सी. चलो सी कौन पे 9 नंबर सी. हां ए मध्य के जण देइछो कि सस्मिता ए देइछि. अच्छा कौन हैला देखिबा ताली से कहिछि. इट वुड बी लार्ज स्केल कहिछि ना. सोलार कैन यूज बी डिसैलिनेशन वाटर. एटे त हेइ परिबो सोलार. अच्छा आ तार कोन तुम हाजार्डियस वेस्ट आसीबन कि, बिल्कुल आसीबो. सिलिका कथा नहीं जो बा सिलिकॉन कहबी, सिलिका तो कहबी, सिलिकॉन्स को तो कहबी. एंड हाजार्डियस मतलब ता द्वारा बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल्स मध्ये रिलीज होते जेतरो से डिकम्पोजिशन हुए. तेन कर कि जो सोलार वेस्ट बा आमे जाको मध्ये कहूचे दिस इज वन काइंड ऑफ ई वेस्ट आमे मध्ये ताकू कहबा. एंड दिस ई वेस्ट ये भी मध्ये आसुची तमर ई वेस्ट कैटेगरी रे आसुची. एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो ए चैलेंजिंग आमे कहि परिबा. So it would be applied, again it would be applied, and again it would be C, all of the above. तो applied based हम कारण ये pollutant मध्य जेतरो से what weathering erosion बा ताकू decompose करिबा, आमे ताकू भांगुचे करूचे जहा करूचे, that would be there. It would be again C.
Question number 10. Consider the following statements. The most world's coral reefs are tropical waters रे देखा जाए. Corals reef host more animals phylas than the tropical rainforest. Right, more animal phylas than the tropical rainforest. Coral reefs occurs in shallow waters where the water is low in nutrient. चलो फिर आंसर देखिबा. बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रही, ट्राई करो. क्वेश्चंस नंबर केते एटा तमरो? क्वेश्चंस नंबर केते 10. चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आंसर दियो 20. क्वेश्चन नंबर 20. दस नंबर ए म्यूजिक एडिक्टेड सुनीता कोची ए. एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द ए. ओके. मैक्सिमम ए. कमला कोची सी. अच्छा यार देखो देखो मते कोठी लागुची यू नीड टू हैव द रिविजन्स दरकार केने रिविजन नहले हबो नाही, दिक्कत हबो ना. प्रथम कथा से कहिची ए ट्रॉपिकल वाटर देखा जाए, दिस इज करेक्ट. तो जदि ए तमर करेक्ट होची ए इज हियर, ए इज हियर, ए इज हियर, सो बी ऑटोमेटिकली कैंसिल हे जिवो. बी ऑटोमेटिकली गॉट कैंसिल. तो बी कोन हिला तमर कैंसिल हेगला. देन कम्स टू कोरल रिफ्स अकर्स इन शैलो वाटर. कोरल रिफ शैलो वाटर हेई थाए, तापि अधिक न्यूट्रिएंट दरकार नाही. जदि न्यूट्रिएंट अधिक हेई जिवो तो सेठी न्यूट्रिएंट अधिक दरकार नहीं, लो न्यूट्रिएंट हेले भी से ग्रो हेई जिवो. तापि बेसी न्यूट्रिएंट दरकार नहीं. न्यूट्रिएंट अर्थात कोन सीवेज वगैरह सेथरु आसीथिबो. सो दैट इज दिस इज करेक्ट. यार मीनिंग कोन? कोरल रिफ होस्ट मोर एनिमल्स फिलास, अर्थात एनिमल्स रो डिफरेंट स्पीसीज अछि. कारण कोरल रिफ्स को कोन कहै छै? द रेन फॉरेस्ट बोली कहै छै, द मेट्रोपोलिस बोली कहै छै. कोन कहै ताकू? द मेट्रोपोलिस ऑफ द ओशन बोली कहै छै. राइट, एटा मन रखो. कोरल रिफ्स आर कॉल्ड एज द मेट्रोपोलिस ऑफ द वर्ल्ड ओशन, सॉरी. राइट, सो इट वुड बी डी. सो आंसर कोन हबो तमर? डी हबो. कारण मु तुमको कहली एटा ठीक अछि. कहीं की कहली? बिकॉज दे आर कॉल्ड एज द मेट्रोपोलिस. मेट्रोपोलिस कहीं की कहै छै की कहबो? व्हाई कोरल रिफ्स आर कॉल्ड एज द मेट्रोपोलिस? बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी. मेट्रोपोलिस कहीं कह जाए? बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी बोली मेट्रोपोलिस कह जाए. आज दिस इज ए मेट्रोपोलिस, अर्थात मेट्रोपोलिस रे विभिन्न प्रकार लोक रुहंती, विभिन्न धर्मर लोक रुहंती मेट्रोपोलिस रे. एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो मोर डाइवर्सिटी, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ कोरल्स इज मोर देन एनी इकोसिस्टम. सो दैट इज व्हाई. एंड हाँ, लो न्यूट्रिएंट दरकार. कारण लो न्यूट्रिएंट एथिपाई जदि न्यूट्रिएंट तमरा हाई हे जिवो देन सेटा यूट्रोफाइड हे जिवो बा कंडीशन आउ किछि डिफिकल्ट हे पारे, ताकू डिजीजेस हे पारे. कोरल को डिजीज हुए. को डिजीज हुए? व्हाइट बैंड, येलो बैंड, ए सब डिजीज हे थाए कोरल्स को. सेतिपाई वी रिक्वायर्ड व्हाट? तो टिके देखि कि चाहि करिवो. देन आसो क्वेश्चन नंबर 11. चलो क्वेश्चन नंबर 11. The Kanha National Park is famous for the conservation of which of the following? Whether it's rhinoceros, whether it is swamp deer, Asiatic lions, black buck. ये उत्तर, ये तो आंसर आसी जाइए ऑलरेडी. छोड़ो, ये मतलब एनिमेशन भूल ही जाइए. अच्छा ये छाड़ दियो. ओके, राइनो फेमस तुम जानछो काजीरंगा भेकरा आसाम रे राइनो फेमस. स्वाम्प डियर एटी फेमस अछि. एशियाटिक लायंस कोठी अछि? गिर फॉरेस्ट रहिछि. ब्लैक बक कोठी रहिछि? जेमते राजस्थान रे ब्लैक बक देखा जाए. इवन हमर बालूखंड रे ब्लैक बक देखा जाए. तो दिस इज हाउ के ब्लैक बक्स वगैरह कहली एशियाटिक लायंस मतलब इंडिया रे सब हाईएस्ट देखा जाए. टाइगर मध्य इंडिया रे वर्ल्ड 80% टाइगर इंडिया रे एका ही देखा जाए. राइनो तुमको आसाम रे देखा जाए, आसाम वैली रे देखा जाए. एंड ये सब स्वाम्प डियर तुमको एठी देखा जाए. एंड ब्लैक बक मु कहली चारियाडे देखा जाए. तो ये आंसर ऑलरेडी अच्छी. तो आपको आम आउ बेसी डिस्कस करवार नहीं. बाकी मुझे लोकेशन ऑलरेडी मु तुमको कहीदेली. नेक्स्ट क्वेश्चंस. यस, सो क्वेश्चन नंबर 12. With reference to the New York Declaration on the Forest, which of the following statements are correct? Statement को पढ़ो. Statement 1 कोच, it was the first endorsed at the UN Climate Summit 2040. It endorses the global timelines to end the loss of the forest. It is legally binding international declaration. It endorsed by the governments and the companies and the NGOs.
कान्हा इन मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। चलो फिर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यूपीएससी 2020 रो क्वेश्चन शायद यूपीएससी पीयूआईक्यू क्वेश्चंस। चलो फिर ट्राई करो। वन टू फोर आफरीन कौच 1 to 4 12 नंबर ए कौच राजेंद्र कौच ए ओके देन आफरीन कौच ए ओके चलो फिर देखा आम देख इट वाज फास्ट एंडोर्स द यूएन क्लाइमेट समिट बिल्कुल अच्छी ये ठीक अच्छी नाउ दिस इज लीगली बाइंडिंग नो दिस इज नॉट लीगल बाइंडिंग दिस इज वॉलंटरी दिस इज व्हाट वॉलंटरी ये हूँ तुमर ये वॉलंटरी इन नेचर नॉट लीगली बाइंडिंग ये लीगली बाइंडिंग नुह सो ऑप्शन 3 is cancelled so option 3 is cancelled option 3 is cancelled as the option 3 is cancelled so that means 1 to 4 is the right answer then आम कह इट इज एंडोर्स्ड हाँ यार टाइम लाइन रही जदि तुमको कह जो टाइम लाइन केते टाइम लाइन हूँ 2030 तो टाइम लाइन जदि तुमको पचार मत के सार ये टाइम लाइन जो लिखाई कौन यहाँ सत ये हूँ 2030 बाय 2030 द फॉरेस्ट लॉस ऑफ द वर्ल्ड वी विल स्टॉप द लूजिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ and this is also correct NGO तो रहिबो participant तो करिबो and that is why timeline केते रही 2030 रही so the right answer is what A the right answer is your A correct next questions 13 question number 13 which one of the following national parks has the climate that varies from tropical to subtropical to temperate and arctic चलो फिर शेयर करते जाओ अरे शेयर करो ना मुझे शेयर करो रे लाइक करो कमेंट करो शेयर करो राइट दैट इज द ओनली मोटिवेशन यार आसिक तुम सामने रे एते ब्यूटीफुल इमेज मतलब प्रेजेंटेशन बना जाउची है ना एनिमेशन करिके राइट दिस इज ओनली फॉर व्हाट क्या हाँ मतलब यू शुड शो दैट अफेक्शन चलो फिर नेक्स्ट which of the following the national parks has questions number 13 the majority is coming from the Arunachal Pradesh somebody is saying the D tell for the D is coming fast okay yes the right answer is D the right answer would be what D the right answer is D Namdhapa National Park though the Namdhapa National Park is the famous in Arunachal Pradesh and this is the national park that evergreen forest found here what evergreen forest 2 that is sub arctic type of climate right so this is the right answer तो right answer प्राय समस्ते तमे देइछो समस्ते ए क्वेश्चन को देखि परुची समस्ते दउची अच्छा मते को नामधापा नेशनल पार्क is famous for what anyone the Namdhapa National Park is famous for what next so I will say this is tropical to alpine type of हमको देखा जो तो questions D then we will comes to 14 which of the following organism performs nitrogen fixation comment करके कहिबो जो मैंने recording भी देखु परे comment you can also do the comment now which of the following organism performs nitrogen fixation whether this is azobacters whether this is mycorrhiza whether this is ribosium or nostoc last leopards तो रहबो big cat will be there right सेटा तो रहबो whether flying squirrels देखा जाए कि नहीं सेटा तो कहबो ना कि हां flying squirrel देखा जाए कि नहीं so नामधापा is famous for what flying squirrels तुमको एठी देखा जबो कोन देखा जबो flying squirrels तुमको देखा जबो okay which of the following से कुछ organism performs that is nitrogen fixation करथे azobacteria obviously से तो करिवो अच्छा चलो फिर आंसर दियो क्वेश्चंस नंबर 14 आंसर दियो चलो 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 फास्ट फास्ट कम फास्ट C is coming fast C is given by whom that is Kamla Kant yes the answer is C
तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी। तो आंसर होउची कारण आमे जदि देखिबा दैट इज व्हाट टू जोटा तमरो माइक्रोरिजा रहिची दैट इज व्हाट से कोन करे से हेल्प करे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पई नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेनी से एब्जॉर्प्शन पई करि थाए। Which one of the following best describes the term greenwashing? Greenwashing काहू कुआचे greenwashing सेटा हम कहबा कोन greenwashing। greenwashing that is what greenwashing। चलो फिर द क्वेश्चन नंबर 15 ग्रीन वाशिंग या आगुर मध्य पढ़ाई देख ये आगुर मध्य पढ़ाई एमती ना कि ग्रीन वाशिंग फास्ट टाइम पे मु कहूँ आगुर मध्य तुम मन को कही डिफरेंट डिफरेंट सेशन रे मध्य मु आगुर कही डू इट फास्ट। 15B किए कहूँ कमलाकांत कहूँ 15B सुनीता कहूँ ए देखिबा मु ताले अच्छा म्यूजिक एडिक्टेड कहूँ ए अफरीन कहूँ ए सुनीता कहूँ ए राजेंद्र कहूँ ए तो मु मध्य कही तो आंसर वुड बी आल्सो व्हाट तो योर आंसर वुड बी ए तो राइट आंसर वुड बी व्हाट ए कारण सिंपल ग्रीन वाशिंग रा मीनिंग कोन कौन सी गोटे लोक को कही कि तू 10,000 गछ लगेबू से तार 10,000 जगह 100टा गछ लगे दे कही 10,000 लगे देछि ताले एटा कोन हला मिछ एटा दिस इज कॉल्ड ग्रीन वाशिंग कौन सी गोटे कंपनी को कही कि भाई तमे CO2 जति प्रोडक्शन होउची बा तमरो जो CO कथा निजो ये सब जहाँ प्रोडक्शन होउची ताकू कमाओ से तार कमई थिबो जदि गोटे टन कहितो 10 टन कमई देछि ते जो फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करिबा दैट इज ग्रीन वाशिंग दैट इज व्हाट green washing so answer would be A। question number 16 coming fast question number 16 coming fast if a particular plant species is placed under the schedule 6 of wildlife protection act 1972 सेतेबेलेर पुराना क्वेश्चंस कौन हबो ताले question number 16 केमती लगुच क्वेश्चंस आज क्वेश्चन तुम मन को केमती लगुच फीडबैक दे दियो हाउ द क्वेश्चंस क्वेश्चंस केमती लगुच तुम मन को चलो फिर फास्ट 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 दियो 16 क्वेश्चन नंबर 16 डू फास्ट चलो फिर हो तो दैट मीन्स तापे लाइसेंस दरकार जो तुमने आंसर दो ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन जेंत के रेड सेंटर कथा नहीं जाओ और मु कहबा आउ किछि एमती इंपोर्टेंट स्पीसीज जदी सेथरे मु सुंदरी कथा नहीं जाई मु जदी ऐड करबी देन इट वुड रिक्वायर्ड लाइसेंस नले तुम कल्टीवेशन करि परिबो नाही। बहुत बढ़िया थैंक यू। So it would be what A. So answer would be what A. बहुत बढ़िया तो that would be what A. So it would be A. तो ये हमें देखिबा that is A. तो आंसर कोन हबो A कौन सी जदी प्लांट स्पीसीज को ऐड करा जबो then 17 questions coming fast the terms intended nationally determined contribution INDCs is sometimes seen in the news in the context of what this is very important UPSC previous year questions मु कही ये परिपूर्ण सीरीज चलची परिपूर्ण स्पेशल सीरीज चलची तम मन को परिपूर्ण स्पेशल सीरीज क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चंस नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17
intended nationally determined contribution is sometimes seen in the news in the context of what? देखो आंसर कौन दीचे, एक मिनट मुझे देखें। बी 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 आंसर देछ ना कि मैक्सिमम देखा मुझे पढ़े ताले देख जमती कि एनडीसी इंडिया रे मध्य आईएनडीसी रही अर्थात ये कोठी आसिला ए कांसेप्ट कोठु आसी कि कहबो आईएनडीसी कोठु आसी कांसेप्ट कोठु आसी को एग्रीमेंट रो आसी को इंटरनेशनल बिग इवेंट रो आसी एंड दैट इज द व्हाट COP21 COP21 टू आसी कोठी हेतला पेरिस कोठी हेतला तमरो पेरिस COP21 पेरिस रु आसी तमरो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी अर्थात जेमिति आमर टार्गेट रही कि बाय 2070 इंडिया वुड बी नेट जीरो कार्बन जीरो हो बाय 2030 वी विल रिड्यूस व्हाट दैट इज आमे कौन करचे कि आमे कौन करू के 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेस 500 gigawatt of non renewable resources आमे केबे सेटा मध्ये प्रोड्यूस हबो सो दीज आर द व्हाट ए सब जो तमर टारगेट रही these are the target ये सब मध्ये आमे कहबा तो these are what target एमान को आमे कोन कहबा ये जो हमर टारगेट रही 2030 so these are the NDC of government of India plus right तन करी आमे कोन कहबा फॉरेन एड दरकार नाही रिलीफ पैकेज दरकार नाही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज दरकार नाही फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज फॉर द डेवलपमेंट फॉरेन aid offer नहीं कि अच्छा देखियो the plans of the action outlined by the countries so this is the answer so B is the answer what the B is the answer तो B is the answer correct answer is B तो मेजॉरिटी तुम माने मध्ये B देइछ देखि देबा मध्ये कमेंट कोन अछि तुम माने करो यस आंसर तुमरो B रहिछि बहुत बढ़िया चलो फिर नेक्स्ट हम जीवा क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चंस नंबर 18 हमें आसीबा क्वेश्चन नंबर 18 which of the following can be what can be threat to the biodiversity and biodiversity threat to biodiversity अच्छा एटा कलर हे जाई छी एटा क्वेश्चन नो एटा ऑप्शन ता तुमरो एटा राइट चलो फिर देखो सो 18 क्वेश्चन नंबर 18 से कोई सी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कोटा ऑप्शन 1 this is option 1 option 2 3 4 options are there that is invasives destruction of habitat invasion of alien species over exploitation of the natural resources pollution climate change and the next one is what climate change चलो फिर आंसर देखो अप्लाइड बहुत बढ़िया तो एटा कोन अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस तो एटा कोन रहबो तमरो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस तमे कर देबो so it would be everything will be there कोन 1 2 3 4 5 all would be there this is what applied questions आको कोन कहै छै applied questions बोली कहै छै because application हमें कोन कहबा it would be what application based questions or you better say applied based questions that will be there 19 questions number 19 question number 19 तो consider the following international agreements जदि हमें कहिबा international agreements हमें कहिबा the Montreal protocols Kyoto protocols Nagoya protocols तो से कहिछि which of the above deals with the access to the geneticals resource fair equitable distribution question number 19 देखिबा कोन करछो question number 19 चलो फिर 19C कौच एडिक्टेड सोल्स कौच सस्मिता कौच सी चलो देखिबा हमें आंसर दियो बाकी मैंने आंसर दियो राइट चलो 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 बाकी भी आंसर दियो ओके अच्छा हमें देखिबा से दैट मींस क्योटो प्रोटोकॉल्स होची तमरा ग्रीन हाउस गैसेस this would be what greenhouse gases कथा ये क्वे so that is wrong ताले 2 got wrong so it will be answer so right ये रही Montreal protocols ओजोन कथा क्वे ये कहा कथा क्वे O3 कथा क्वे
तो ये भी cancel. That means one got cancel, one got cancel. So it would be 3 is the answer. Right. So 3 would be तोहर ये GS वो greenhouse gases है जिवो, and that is why that would be all. C is the answer. Right. The C is the correct answer. Correct. And the question number 20. Consider the following things. And the last questions for you. Black-necked crane, cheetah, flying squirrels, snow leopards. Which of the following are naturally found in India? The last questions. The last one. देखो लेंदी क्वेश्चंस बोली अल्प क्वेश्चन होची बट कांसेप्ट क्लैरिटी होची एंड एथरे क्वालिटी क्वेश्चंस रोची जदी सिंगल लाइनर नैथले 30 टा 40 टा क्वेश्चन हे जिवो सो दैट वुड नॉट वर्क फॉर यू देवाशीष कहूची बी व्हिच वन बी कहूची देवाशीष बाकी माने कोन कहूछ लास्ट क्वेश्चंस आंसर दे दियो फटाफट बी कहूची कमलाकांत बी सी राजेंद्र कहूची सी लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ब्लैक्स तुमको चीता कौन इंडिया रे देखा जाएगी तो इंडिया रे तो चीता देखा जीवनी ना एमते ना कि कहबन के साथ चीता आनी की रखी देछि देखा जता सेटा से नेचुरली कहिছে ना व्हाट दैट इज नेचुरली से कहिছে नेचुरली इट इज नॉट क्या तुम कह कैप्टिव रे सर एमते चीता आनी की रखी छे कैप्टिव रे सेटा हो सो चीता गॉट कैंसल टू गॉट कैंसल टू गॉट कैंसल टू गॉट कैंसल सो बी विल बी द आंसर व्हाट बी विल बी द आंसर तो नेचुरली चीता मिलेनी कैप्टिव रे मिले and that is the B answer देछि कि म्यूजिक एडिक्टेड सोल्स देछि that means B and कमलाकांत B बाकी सब C कहिसंती तो बाकी सब C कहिसंती फ्लाइंग स्क्विरल बा तुमको कहली सर देखा जाय बोली कहनी कि एटा देखा जाय तो 4 एंड राइट ए दीटा देखा जाय कहनी कि तुम को ये दीटा देखा जाय बोली बा फ्लाइंग स्क्विरल्स कथा कहली आउ टिके पूर्व अरुणाचल प्रदेश रे हम डिस्कस करूथिले राइट चलो तो दिस मार्क्स द एंड्स ऑफ द सेशन बट परिपूर्णा स्पेशल जो तुमरो चली जॉइन द परिपूर्णा बैच को जॉइन कर देयर आई एम आल्सो टीचिंग मुझे तुम पेड कोर्सेस नौची ताबेते तुमरो जो ग्रुप ऑफ फैकल्टीज रहिसंती समस्त नौछंती जॉइन दिस बैच एंड द गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स and continue to watch the Paripurna sessions of MCQ for the OSSC Prelims 2024. And with this I will say thank you everyone, keep liking, keep watch, keep sharings and also comments. Thank you all. Good night to all.